Hey everyone, a very warm welcome to a super exciting episode of the Fisdom Wealthcast. With us today, I have one of my most special and favorite guests of all time. Probably the only guest who I've probably invited thrice by now, but I just can't get enough of insights from him. So with us we have Aashish Somaiyaa, who is the CEO of WhiteOak Capital Asset Management Company. So, Ashish, a very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Thank you. Thank you very much for having me, Nirav. It's my pleasure to come and speak to you. So, Ashish, the question of the hour, the question of every hour, each time I conduct a wealth cast and each time I meet someone, the number one question on behalf of all investors, market kya bolta hai? Right. So, according to you, how are you reading the situation? Nifty today touched a lifetime high. How do you interpret it and how do you see it going ahead? So, frankly, I've been a little wrong and a little surprised, both, for the past few weeks. Um, why did I say that I'm surprised, or why did I say I've also been wrong? Because uh, frankly, I used to think that just to give you some context, why I'm saying this, October 2021 roughly is when we had made a high, and that's the high of October 2021, which now after 13 months probably we have breached and made a new high. But if you really look at it, from October 2021, starting with China tech sector, then US tech sector, then the war in Ukraine, then commodity prices, inflation in US, unprecedented rate hikes in US, all of these things have happened. And you must recall that by June July 2022, we were all the way down to 15,000 on Nifty. Now what has happened is that from that level we have started making new highs. But why did 18,300 become 15,000 in the first place? If you ask somebody all these reasons, all the reasons I've stated. And why did I say I'm surprised and I have been wrong is because all the reasons are very much there, but the market has decided to make new highs. So generally speaking, one would be a bit cautious, because if you really look at it, if you look at the environment around us right now, these are the kind of environments. I don't know what can go wrong, but I can just tell you that these are the kind of environments when the probability of something, untoward coming up is more likely. Let's put it that way. So obviously, India is doing really well on a relative basis. We all know, as far as our corporate performance is concerned, as far as our economic performance is concerned, and arithmetically, you can argue that our corporates and our economy, how much is it correlated or not correlated, across sectors, with different parts of the world. But when it comes to stock markets, stock market globally is one stock market. I mean, if something negative happens outside, just like I gave you the example of 18,300 all the way down to 15,000, even that time India was doing very well, but we fell because of the global scenario. So can we have volatility, and can we have some or the other downsides because of the global scenario? I think it can't be ruled out. And generally I would say that people should be careful and not get carried away with the new highs. So wonderful elaboration, Ashish. I feel there's enough food for thought there for each one of us, because what you said is actually right. Nothing has really changed, and yet so much has changed in such a short time. So that's quite paradoxical, at least at the very sight of it, at the very uh, you know. Uh, that's the way it's apparent. So, Ashish, today's theme is about large caps and blue chips, and I have one very pertinent question that many investors also write to us about it, right? And this is a very common question, and let me give you some background context. This Yeah. has to do with the very popular active versus passive investing debate, wherein the jury is still out on what is going to be the future and what is the present, but very specific to large caps, right? There has also been, there was a recent report, the Spiva report, mid-year report, which Yeah. showed that over 85% of actively managed large cap funds have underperformed indices. And if you go through a 1 year return, 3 year return, 5 year return period, the underperforming
number of funds is almost 90% of the funds underperformed on a 1 year trailing basis, right? So this clearly, at least if you were to look at data in black and white and arrive at a conclusion just basis this, it is very easy to assume that it's very difficult to now create alpha in the large cap space. It is now very difficult to outperform the large cap index. Do you feel this is the right way to look at it, or what are your perspectives on this subject, especially about passive investing in large cap indices versus investing in actively managed large cap funds? Sure. So, Nirav, actually, two or three things. But before this, one simple disclaimer that, frankly, in a previous life or in a previous role, I have played, some role in launching a lot of passive products, right? Uh, so I would just put it this way that I am not. I would like to believe I am not biased in any manner, and I'm open-minded about it. And I have created all types of products in my various roles over the last 20 years. So I would put it this way that so first thing is, like I said, no biases really. And personally, if you ask me, I find it a no-brainer, because if I step into a customer's shoes, I am also an investor, right? If I step into an investor's shoes, it's a no-brainer that if the active funds don't perform, then people will go to passive products, right? Because that is how commercial stroke unemotional decisions should be made. But now, coming to the data that you quoted and coming to the scenario out here, uh, at the outset, I would say that I still believe that there is scope for alpha. But clearly, it is very important and incumbent upon us that we should, contextualize. Because all said and done, whatever my belief may be, the fact is that yes, there is data you quoted, and that's how it has happened in the last few years. So to contextualize that, we need to understand two or three things. The first and most important thing is that if you were to just for a moment look at certain data, what are these active funds? Now we are specifically talking large cap. So what are these large cap funds actually trying to do? Needless to say, they have to buy a bunch of stocks, construct a portfolio, and they have to outperform Sensex or Nifty over a period of time. Now, if you look at for a moment, look at Sensex, look at Nifty, and all these indices. See what has happened in the last 3 to 4 years. First thing I would like to explain to you is that what do active managers do has a lot of dependence on how economic performance actually plays out. If you see, starting 2018 is when our economy actually started to seriously slow down and contract. Correct? Because in 2018, ILFS defaulted. After that, there was a credit crisis. A couple of banks went under, few NBFCs went under, right? And which is the next bank to blow up is the kind of conjecture that was going on. So 2018 onwards, the economy really, and you might know that system level credit offtake in India before COVID was actually zero. There was no credit offtake, there was no private sector capex. 2018, the economy started slowing. By 2019-20, India's GDP growth was 3.7%. By the way, US, which is 22 trillion GDP, they grew 3.5% and they had 2% inflation. India, which was 2.5 trillion, for us, 3.5% growth is as good as a recession actually. And after 2021, you know that there was COVID and the economic growth actually went narrow. This is kind of the year of recovery, if you see calendar year wise. So what happens is that when economic performance becomes very, very narrow, and to quote you some more statistics, in 2018 and 2019, 50% of all large cap stocks, which form part of the index, Nifty 100 is the large cap universe. 50% of the stocks in Nifty 100 gave negative return. But in those 2 years, Nifty gave a 5% positive return. Okay, so just to give you a sense, when I'm saying that economic performance became when economic performance becomes very narrow, it's obvious that corporate performance also becomes very narrow, and that is what reflects in stock markets and indices. So to carry on from the data, I know that we are not talking small and mid cap, but just so that you understand the shape of the market. In 2018-19, those two calendar years put together, 80% of small cap stocks gave negative return, 60% of all mid cap stocks gave negative return, and half of all large cap stocks gave a negative return. And you might recall anecdotally that 2019, the only stocks which did well in the market were actually Reliance, ICICI, or mere khayal mein Tata Motors or something like that. Yeah. So first thing
I think there's a request to speak Hindi, so you want me to kind of mix it up? Is that the Yeah, way to do it? probably. Yeah, if you could mix up. Sure. Yeah. So what we need to understand के जब आर्थिक व्यवस्था में जो when the economic performance becomes very narrow, तो कंपनियों का परफॉर्मेंस भी श्रिंक होता है. कंपनियों का परफॉर्मेंस श्रिंक होने से बाजार का और इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस नैरो हो जाता है. नाउ व्हाट डू एक्टिव फंड्स एक्चुअली डू? एक्टिव मैनेजर्स दे आर ट्राइंग टू बाय कंपनीज जिसका कैश फ्लो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ इज मोर देन एवरेज और मोर देन द ब्रॉड मार्केट. बट अगर आप ध्यान से देखें, इन अ 2 year स्पैन, अगर निफ्टी पॉजिटिव 5% रिटर्न देता है और निफ्टी 100 जो लार्ज कैप फंड्स का यूनिवर्स है वो आधा यूनिवर्स नेगेटिव रिटर्न देता है, तो व्हाट विल हैपन? ये एक चीज हमको वी हैव टू थिंक अबाउट इट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा क्या होता है व्हेन पीपल लुक एट परफॉर्मेंस, वो क्या क्या कहते हैं कि 1 year, लास्ट 1 year, लास्ट 3 year, लास्ट 5 year. लेकिन क्या है नीरव, दीज आर ऑल नंबर्स. इफ यू हैव 3 bad years लाइक 2018, 19 एंड 20, अगर 3 कैलेंडर ईयर आपके खराब गए ना, तो आप पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल, क्या पिछला 10 साल भी खराब दिखेगा. और पिछला 3 साल अगर आपका बढ़िया गया है तो पिछला 10 साल भी अच्छा दिखेगा, बिकॉज दैट इज हाउ आप CAGR बोलते हैं, दैट इज हाउ CAGR वर्क्स. क्योंकि CAGR में कोई 1, 2, 3 साल में अगर आप डेटा को या नंबर्स को खींच देंगे तो पूरे पीरियड का नंबर्स चेंज हो जाएगा. Correct. तो कितने फंड्स ने आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रीट पीरियड्स देखना चाहिए. आप देखिए कि 1 April to 31 March, हर एक फाइनेंशियल ईयर, हर एक कैलेंडर ईयर, इस Right. तरीके से आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितने प्रतिशत फंड्स ने आउट परफॉर्म किया या नहीं किया. अगर यहाँ पे खड़े रह के आप बात करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आर्थिक व्यवस्था में और बाजार का परफॉर्मेंस नैरो हो जाता है तो ज्यादातर फंड स्ट्रगल करेंगे. अच्छा, दूसरी बात केवल इकोनॉमी की नहीं है, फंड्स के स्ट्रैटेजी की भी है. ऐसा नहीं है कि फंड्स ने सब सही किया है. हमारे इंडस्ट्री में पिछले 5-7 साल में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स का, वो काफी, मतलब मेरे ख्याल में 8-10 गुना बढ़ गया है. तो जब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 8-10 गुना बढ़ता है तो फंड को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी भी लोगों की बदलनी चाहिए. अब जो मुझे एनेक्डोटली पता है, 10 साल पहले जो बंदे का समझो कि 5,000 करोड़ का कॉर्पस था, 10,000 करोड़ का कॉर्पस था, वो कहता था कि मैं वैल्यू मैनेजर हूँ या कॉन्ट्रा मैनेजर हूँ या ग्रोथ मैनेजर हूँ. आज 2.5 लाख करोड़ के कॉर्पस में भी वो वैल्यू मैनेजर, कॉन्ट्रा मैनेजर या ग्रोथ मैनेजर है. तो जाहिर सी बात है कि इफ योर कॉर्पस गोज अप 10 times, देन यू नीड टू रन मोर. देखिए क्या है, निफ्टी हो चाहे निफ्टी 500 हो, ये जो इंडाइसेस हैं वो बाय डेफिनेशन दे आर इंडाइसेस. दे आर नॉट ग्रोथ, वैल्यू, कॉन्ट्रा, सिक्लिकल, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट्स, डिफेंसिव, सिक्लिकल. इंडेक्स में सब कुछ है, राइट? सो इफ योर पोर्टफोलियो हैज टू बी बैलेंस्ड. क्या होता है, आमतौर पे लोग एक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट करना, उसका शॉर्टकट क्या है कि वैल्यू ले लो, ग्रोथ ले लो, क्वालिटी ले लो. ये भी एक्टिव मैनेजमेंट है, बट यू आर डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट बाय बेटिंग ऑन सर्टन फैक्टर्स कि बाजार में ग्रोथ चलेगा, क्वालिटी चलेगा, वैल्यू चलेगा. हम लोग क्या हमेशा रेकमेंड करते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन बेस्ड ऑन स्टॉक पिकिंग, नॉट बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स, Styles. Yeah. स्टाइल्स. हाँ, तो ये सारे कारण है मुझे लगता है जिसकी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आ जाएगी वापस. वंस पीपल अडेप्ट एंड वंस द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेस, आई थिंक. देखिए, हमेशा कुछ अच्छे फंड, कुछ खराब फंड तो रहेंगे ही रहेंगे. सारे फंड्स की गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन Right. हकीकत यह है कि मार्केट में अल्फा जनरेट करने का पोटेंशियल है. एग्जीक्यूट कैसे करें वो, दैट्स अ सेकंड थिंग. एब्सोल्युटली. आई फील आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पुट अक्रॉस किया था कि दिस डेटा, डेटा विल कन्फेस टू एनीथिंग इफ यू टॉर्चर इट, राइट? राइट. सो डेटा को देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है. तो फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट, जब भी आप कोई डेटा देखते हो या कोई हेडलाइन पढ़ते हो, प्लीज ट्राई एंड गो बियॉन्ड द हेडलाइन एंड बियॉन्ड द डेटा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेटा व्हाई. का डेटा की एक खास बात है नीरव, कि जितने लोग भी जब डेटा निकालने को बैठते हैं, जैसे मैं अपना भी एक कन्फेस करता हूँ, जैसे सी फॉर एग्जांपल, आपने किसी का मुझे डेटा बताया, राइट. कोई डेटा आपने कोट किया. अब आपने जो डेटा कोट किया वो ये डेटा ढूंढने जा रहा है बताने के लिए कि एक्टिव फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं. तो यस. आपके सामने मैंने डेटा प्रेजेंट किया ये बताने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भी कारण होते हैं. तो राइट. अगर हम एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ डेटा ढूंढने निकले ना, तो सारा डेटा मिल जाएगा. बहुत कम लोग हैं जो ओपन माइंडेड तरीके से
डेटा ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं कि डेटा क्या बता रहा है। सी Right. आइडियली स्पीकिंग आपको डेटा ढूंढना चाहिए, फिर पता करना चाहिए कि डेटा आपको क्या बता रहा है, और फिर उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करना चाहिए कि ये डेटा ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स है चाहे कोई भी हो, हम सबके साथ ये होता है कि पहले हम मन बना लेते हैं कि भाई मैं क्या ढूंढने निकला हूँ। तो अब जब Yes. ढूंढने निकले तो वो डेटा आपको मिल ही जाएगा, डेटा की कहाँ कमी है, Right. राइट। बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई फील जब भी डेटा को अप्रोच करते हैं तभी एक काफी एक्सप्लोरेटरी और डिस्कवरी वाला पर्सपेक्टिव लेके जाना चाहिए, ना कि कंक्लूसिव। डू नॉट ट्राई टू अराइव एट अ कंक्लूजन राइट एट द आउटसेट, लेट द कंक्लूजन बी अ डेरिवेटिव ऑफ योर एक्सरसाइज। एक बार आप डेटा देख लीजिए, ओपन माइंड से समझ लीजिए, परख लीजिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि ये डेटा आपको क्या कहानी सुनाना चाहता है। एंड और क्यों, ऑल्सो उसके पीछे के कारण इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। yes, what's more important than the data in itself is the story behind the data. The data is just the final print, right? And for our viewers, एक काफी सही चीज जो आशीष जी ने बताया है कि हम जो ढूंढने निकलते हैं हम वो ही पाते हैं। इसमें एक बिहेवियरल फाइनेंस में एक कंसेप्ट भी होता है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। यू नो, इफ यू गाइज वांट टू रीड अप मोर अबाउट इट, इट्स अ फैंटास्टिक थियरी ऑन वन ऑफ द कॉग्निटिव बायसेस की कंफर्मेशन बायस कहता है कि अगर आपने आपकी खुद की एक धारणा है, एक मान्यता है, आपने खुद एक चीज को मान चुके हो, तब पूरी दुनिया ये साजिश रचेगी ताकि वो आपको रीइंफोर्स कर दे वो थॉट आप में, और आपको वो बिलीव करवाए कि आप जो सोच रहे हो वो सही है। सो आशीष, अ वेरी ब्रिलियंट पॉइंट मेड ऑन हाउ शुड वन व्यू डेटा एंड गो थ्रू सच you know I'd say headlines, more than anything else, just headlines, right? Because ये काफी सनसनी पैदा करती है मार्केट में। लोग पढ़ते हैं, कहते हैं अरे एक्टिव फंड मैनेजमेंट तो आउट परफॉर्म कर ही नहीं पाता, इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। सो गाइज, एक बताते हैं, जैसे फिस्डम के रिसर्च टीम में एक कॉमन जो टीचिंग हमारे टीम को दी जाती है वो होती है कि स्टोरी शुरू होती है डेटा से। यू प्रोसेस डेटा, इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, यू प्रोसेस इट फर्दर, इट बिकम्स इनसाइट्स, यू प्रोसेस इट फर्दर, देन इट बिकम्स एन एक्शनेबल इनसाइट। और ये जो फासला है ना, इसके बीच का जो ये जो गैप है, the only bridge between it is the story behind that data, which can take you from data to actionable insights. So Ashish, thanks a lot, that was some wonderful insights. uh, एक लार्ज कैप के रिगार्डिंग एक और एक और धारणा है कि लार्ज कैप्स आर लेस रिस्की। ये जो रिस्क का सब्जेक्ट है बहुत ही पेचीदा है। एंड very surprisingly I realized, and I've always said this, there's a very thin line between simplifying and trivializing things, right? And quite often than not we err on the side of simply or trivializing instead of simplifying. So risk माना जाता जी, है कि इसमें घाटा लगने के चांसेस बहुत कम है लार्ज कैप स्टॉक्स में। So is that the case? Is it actually the case that large caps are less risky than mid caps or small caps? Is it the right way to look at it? हाँ, नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है, डेटा भी दिखाता है इसको। Hmm. और इसके कई कारण हैं, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी, बाजार का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जब मैंने आपको उसका डेटा बताया कि 2018-19 के जो 2 कैलेंडर ईयर्स फॉलोड बाय 2020 आल्सो, लेकिन 2020 खत्म होते होते मार्केट रिकवरी पे आ गया था। तो 2018-19 का जब मैं आपको डेटा बता रहा था तब मैंने आपको बताया, आपको याद होगा कि जब आर्थिक व्यवस्था खराब थी तो 2018-19 में 80% स्मॉल कैप कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, Yeah. 60% मिड कैप कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, और 50% लार्ज कैप कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये एक सोचने वाली बात है। और जब मिड एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स पिट गया था, तब फिर भी Hmm. निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका मामूली सा एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, खराब से खराब माहौल में। तो ये तो आपको बताता है बाजार का परफॉर्मेंस। दूसरी बात, इफ यू कीप फोकसिंग ऑन द मार्केट, अगर आप देखते हैं कि भाई ईयर बाय ईयर देखते हैं, तो लार्ज कैप का मतलब 2010, 2011, 12, 13, 14, ऐसे एक एक साल का भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस में आप सारे इंडाइसेस कंपेयर कर लीजिए, तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे है, मिड कैप इंडेक्स है वो थोड़ा बीच में है और संभला हुआ है थोड़ा, लेकिन लार्ज कैप इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है, अगर खराब होता है तो सबसे खराब नहीं होगा, और बढ़ेगा तो भी सबसे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये सब तो सही बात है कि लार्ज कैप इज रिलेटिवली, आई वुड से, लेस वॉलेटाइल। देखिए, रिस्की तो इक्विटी पूरा का पूरा ही रिस्की है, लेकिन Right. रिस्क आता है फ्लक्चुएशंस की वजह से, खास करके डाउनसाइड फ्लक्चुएशन की वजह से। तो Yes. फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी की अगर बात करेंगे तो लार्ज कैप इज द लीस्ट वॉलेटाइल।
और इसके पीछे के कारण भी है, इसके पीछे साइंस भी है कि देखिए लार्ज कैप कंपनीज जो है, मोस्टली यू विल फाइंड दैट लार्ज कैप कंपनीज, यू जैसे अभी आजकल एनवायरनमेंट थोड़ा टफ होते जा रहा है, so you'll find that large cap companies, if they have financial requirement, they are able to access capital, they are able to raise money. Large cap companies can raise money from outside, they can raise money from private equity, they can raise money from stock market, they can issue bonds, they can borrow from banks. सारे के सारे कैपिटल इनको रास्ते सारे अवेलेबल हैं. दूसरी चीज, ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज विल हैव अ लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड. थर्ड थिंग, लार्ज कंपनीज जनरली अपने सेक्टर्स में मोनोपोलिस्टिक हो सकते हैं या लीडर्स हो सकते हैं, राइट. थर्ड इज दैट कई लार्ज कैप कंपनीज तो होल्डिंग कंपनीज है, उसके अंदर कई सारी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज का समावेश हो जाता है. जैसे आप देखिए एल है, आईसीआईसीआई बैंक है, Right. महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एचडीएफसी है. तो ये केवल लार्ज कैप कंपनीज ही नहीं बल्कि होल्डिंग कंपनीज और इनके अंदर इनके सब्सिडियरीज की काफी वैल्यू है. सो काफी सारे कारण है जिसकी वजह से यू विल फाइंड दैट large cap companies are more stable and they are less volatile. ये तो सही बात है कि जो लोग रिस्क एवर्स हैं, इक्विटी Right. में डालना तो चाहते हैं लेकिन कभी 50% ऊपर कभी 50% नीचे, इस तरीके की वॉलेटिलिटी जो लोग नहीं झेल सकते हैं, रात को जिनकी नींद उड़ जाती है, तो देन उनके लिए लार्ज कैप इज बेटर. राइट. सो आशीष, आपने ये व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू दिस आपने एक हल्का सा जिक्र किया रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स बहुत बहुत अच्छे भी नहीं होंगे वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, और साथ ही साथ जब डाउनसाइड होगा तो बहुत आपको डाउनसाइड के तरफ में प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है जो जी. लार्ज कैप्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं. सो ये और एक मान्यता है कि व्हाई इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, बिकॉज रिस्क कम है, रिटर्न्स भी कम ही मिलने वाले हैं. अगर हमारा स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन हो, मान लीजिए एक 5 year प्लस काइंड ऑफ होराइजन हो, तो वी आर ओके विथ नॉट होल्डिंग एनी लार्ज कैप्स, बिकॉज अगर इतना समय तक होल्ड करना ही है एंड इफ टाइम पीरियड स्मूथेंस द वॉलेटिलिटी, देन व्हाई बाय लार्ज कैप एट ऑल. रिटर्न्स तो सारा मिड एंड स्मॉल कैप से आने वाला है. सो इस जो थॉट प्रोसेस है, इस पे आपकी क्या राय है? सी, जितने भी निवेशक जब निवेश करते हैं, एज मेनी टाइम्स व्हेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट, they all have this noble thought that they will invest for 5 years, invest for 10 years. ऐसा सब बोलते हैं. लेकिन अगर आप, मैं स्मॉल कैप का अपना एग्जांपल मैं आपका एक ऑन अ लाइटर नोट अगर आप मैं बताऊं, तो स्मॉल कैप में क्या होता है, 5 साल में जन्नत भी दिखती है, जहन्नुम भी दिखता है. तो लोग बोलते हैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ. जनवरी 2018 में, मैंने अभी 2-3 बार बोला ना कि 2018 के बाद बाजार खराब हुआ, ब्ला ब्ला. तो आपको मैं याद दिलाता हूँ कि 2018 जनवरी में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका लेवल था 9,000 के ऊपर. ठीक है. फिर 18-19 का तो मैंने आपको बोला कि खराब होते चला. मार्च 2020 आते आते ये 9,000 का निफ्टी स्मॉल कैप, इसका लेवल हो गया 3,000 बॉटम पे. ओके, 3,000. और अक्टूबर 2021, समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर 21, द लेवल वाज 12,000. ओके. अभी 10 के आसपास होगा. और 5 साल अब तक खत्म ही नहीं हुए. देखिए, जनवरी 2018 में जब पीक बना, वहां से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है. अभी तक तो जनवरी 2023 आया ही नहीं है. फिर भी आप देखिए क्या हो गया. अच्छा, उस सेम पीरियड में मैं आपको निफ्टी की जर्नी बताता हूँ. दैट टाइम निफ्टी वाज जस्ट ओवर 10,000. ठीक है. एट द वर्स्ट लेवल, इन मार्च 2020 निफ्टी वेंट टू 8,000. दैट 8,000 का पीक वाज 18,000. नाउ वी मेड अ न्यू हाई. करेक्ट. तो आप देखिए 5 साल में निफ्टी का मूवमेंट कितना. एट द हाईएस्ट एंड 10-11 था, फिर 8 हुआ, फिर 12.5 हुआ, फिर से नीचे गया, फिर 18 पे आया. दिस इज द जर्नी ऑफ लार्ज कैप. तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत ज्यादा कोई रिटर्न नहीं बना है, क्योंकि करीब करीब 5 साल होने आए और ये अभी तक 70-80% अप्रिशिएट किया, तो 12-13% कंपाउंडेड हुआ होगा. स्मॉल कैप का डिपेंड्स वेयर यू स्टार्ट. जन्नत भी आ गया, जहन्नुम भी आ गया. राइट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट 5 साल खत्म भी नहीं हुआ है. और 5 साल खत्म भी नहीं हुए. सो व्हाट हैपेंस इज दैट लॉट ऑफ टाइम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वगैरह. बट क्या होता है, जब मार्केट बॉटम पे आता है ना, तब डिसाइड करने का लॉन्ग टर्म है कि नहीं है. राइट. ऐसा एयर कंडीशन माहौल में सब बैठे हैं, तब तो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं. कल अगर 20% नीचे गिरेगा तो पता चलेगा कितने वाकई में कितने लोगों को नींद आती है और कितने लोगों को एयर कंडीशनिंग में भी पसीने निकलते हैं. राइट. दैट्स द थिंग. So I think that, like I said earlier, people who want, and by the way, खराब रिटर्न का भी एक relatively definition होना चाहिए. What is bad return? देखिए,
30 साल का हिस्ट्री है सेंसेक्स का 12% कंपाउंडेड, 30 Yes. साल का, ओके, लंबे अरसे का, लाइक फ्रॉम इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ ना अर्ली 90 से, तब से लेके अभी तक। हाँ. Hmm. तो भी आप बताइए 12% खराब है या अच्छा है? तो और कितना चाहिए, राइट? इट्स लाइक दैट। Right. Yeah. और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग तो इंडिया में लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन देखिए Hmm. इंडिया एज अ कंट्री इज अ स्मॉल कैप, क्योंकि वर्ल्ड का जीडीपी 95 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है। वर्ल्ड Yes. का मार्केट कैप 80-85 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया का मार्केट कैप 3.5 ट्रिलियन है। Yes. तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया इज अ स्मॉल एंड मिड कैप, राइट? Yes. तो उसमें हम ढूंढने निकलते हैं स्मॉल कैप। सी, Yes. अ लार्ज कैप स्टॉक मार्केट इज द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। इंडिया Hmm. का लार्ज कैप मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। Right. रिलायंस इंडस्ट्रीज 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ मतलब 200 बिलियन डॉलर, Right. करेक्ट। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी एप्पल है, 2 ट्रिलियन के ऊपर है। तो Yeah. इंडिया की जो लार्ज कैप में भी लार्जेस्ट कंपनी है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी में 1/10 है। Right. और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, वो इंडिया का 66% मार्केट शेयर, मार्केट कैप का उसमें समावेश हो जाता है। सी, Yes. इंडियाज मार्केट कैप इज 3.5 ट्रिलियन, Yes. एप्पल मार्केट कैप इज नियरली 2.2 और 2.3 ट्रिलियन, Yes. राइट? Apple is the world's largest listed company. In India, Yes. Reliance is the largest listed company. It's not even 1/10 of Apple, less than 1/10 of Apple, correct? और Yes. इंडिया का 100th कंपनी है ना, इंडिया का 100th कंपनी इज ओनली 47,000 crores. Hmm. 47,000 crores is only 6 billion. 6 बिलियन डॉलर कहाँ आप ढूंढने जाओगे? वर्ल्ड की 100th कंपनी है, वो भी 100 बिलियन है। Right. सी, Right. वर्ल्ड का टॉप 100 है ना, वो 100 बिलियन पे रुकता है और 2 ट्रिलियन से स्टार्ट होता है। इंडिया का टॉप 100 है ना, वो खाली 200 बिलियन से स्टार्ट होता है और 6 बिलियन तक जाता है। Yeah. Yeah. और सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% कंपाउंडेड है। अभी ये सब डेटा आप देख के आप इमेजिन करिए कि मतलब लार्ज कैप में रिटर्न बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या पूरी जर्नी हो गई है, क्या हमको सिर्फ स्मॉल कैप ढूंढने जाना है? ऑल दीज नोशंस नीड टू बी क्लियर। Absolutely, I feel the perspectives and जो नजरिया आपने शेयर किया at this point in time, it has done a very good thing of leaving us with some more productive questions for ourselves than answers. I feel we need to really dig deeper and understand. थोड़े और डेप्थ में जाते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस नजरिए से या जो प्री कंसीव नोशन लेकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट के समय, क्या वो एक्चुअली सही है? इज इट एक्चुअली वर्थ द यू नो See, या I'll tell you something on a lighter note. क्या हम्म होता है, जैसे अभी इंडिया का 3.5 ट्रिलियन का जीडीपी है, हम्म करेक्ट, बाय ऑल अकाउंट्स, और $2,500 पर कैपिटा इनकम है। तो राइट जितना भी आजकल हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि 25 साल अगला हमारा अमृत काल है, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है पॉलिटिकल जार्गन है, ये रियलिटी है, इट इज ग्राउंडेड इन रियल इकोनॉमिक्स, राइट? और ऐसा मानते हैं कि 3.5 ट्रिलियन का अगले 10 साल में करीब करीब 7 ट्रिलियन हो जाएगा। और जब जीडीपी डबल होगी तो पर कैपिटा इनकम डबल नहीं होती है, क्योंकि थैंकफुली जितना तेजी से जीडीपी बढ़ता है उस रफ्तार से पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। तो राइट जीडीपी अगर डबल होगी तो पर कैपिटा इनकम शुड बिकम 3 to 4 times, रफली यस समथिंग लाइक 3 times, करेक्ट? या तो जब हम ये लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इंडिया में कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये एप्पल फोन इंडिया में बनाना, एक्सपोर्ट यहाँ से करना, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करना, ये लॉजिकल है, बिकॉज दुनिया को ग्रोथ करने के लिए मार्केट चाहिए होता है। और इंडिया अगले थोड़े सालों में इंडिया विल बी द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट एंड द बिगेस्ट लेबर मार्केट, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट तो क्या है कि यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, नाउ यू जस्ट नीड टू डू द राइट थिंग्स। राइट एंड राइट आप स्कूल कॉलेज के जमाने से सुनते आ रहे होंगे कि डूइंग द राइट थिंग्स, इसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इन आवर एक्चुअली क्या होता है कि लोग ये स्मॉल कैप मिड कैप, जैसे हम भी स्मॉल कैप मिड कैप मैनेज करते हैं, तो मेरा ऐसा कोई बायस नहीं है। मुझे भी कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ, स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस इज एक्साइटिंग, इट कैन मेक मोर रिटर्न्स, देयर इज मोर स्कोप फॉर अल्फा, ऑल दैट इज फाइन, बट पीपल गेट एक्साइटेड बिकॉज दैट नीड्स टैलेंट, यस right? But to make money, you need only sincerity. You don't need talent. करेक्ट You are in a market. You are already in the right place at the right time. Now you need to do the right things. That यस only needs sincerity and discipline. It doesn't need so much talent. ज्यादा talent दिखाएंगे ना, तो फिर ये होता है जो मैंने बताया, जन्नत जहन्नुम वाला चक्कर।
Absolutely, absolutely. Or we have seen, we have observed, काफी जो investors है, they lose out simply because they're sitting on the fence, busy analyzing and observing and making notes, and meanwhile field पे सारे खेल के चले जाते हैं, सबका सब कुछ हो जाता है, ये तभी भी एनालाइज करते रहते हैं कि ये पिच सही था या ये मौसम सही है या नहीं. So I completely concur with that point, Ashish. You made a very important point. So, Ashish, I also have a very interesting question. Incidentally, you are also, so WhiteOak Capital Mutual Fund has also launched its large cap fund. It is now in its NFO period. It is now a new fund offering available to all investors as we speak. So, we spoke so much about large caps and how should one view it. But what is it that WhiteOak Capital Mutual Fund is trying to do differently to deliver value to all the investors in this very specific fund? सो एक्चुअली क्या है कि हमारे तो सी फ्रैंकली हम तो नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इट्स अ न्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनी. So we have to put all the basic products in range. So we have flexi cap, we have mid cap, we have tax plan, we have large cap. Then eventually we'll have balanced advantage fund. We'll also have a small cap fund. So Yeah. see, we basically have a very large team, 36 people in research, right? And we manage 6 billion. बाहर के foreigners का पैसा इंडिया में लगाते हैं, इंडिया के investors का पैसा लगाते हैं. So we offer, the whole range of funds which can make money for investors. तो Yeah. कोई फेवरेट इसमें है नहीं कि यही करना चाहिए वही करना चाहिए. ऑब्वियसली अब तक हम लोग पर्सपेक्टिव देते आ रहे हैं कि भाई लार्ज कैप को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए. जैसा मैंने बताया, बहुत लोगों को लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में ही पैसा बनता है, इसलिए ये सब पर्सपेक्टिव में दे रहा था कि क्यों एक्टिव मैनेजमेंट भी हो सकती है, लार्ज कैप में भी पैसा बन सकता है. नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू व्हाइट ओक, सी 2-3 चीजें हैं. हमारा ऐसा, एक चीज तो मैंने आपके सवाल के जवाब में ऑलरेडी बोला था कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए. Right. क्योंकि क्या होता है कि लोग लार्ज कैप फंड्स जब मैनेज करते हैं तो एक तो 100 फंड्स, जो 100 स्टॉक है उसके अंदर ही अंदर आपका 80% एलोकेशन होना चाहिए. तो एक तो यूनिवर्स 100 का है, उसमें से आप स्टार्ट होते ही बोल दोगे अगर कि आई एम अ ग्रोथ मैनेजर, आई एम अ वैल्यू मैनेजर, आई एम अ क्वालिटी मैनेजर, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. वो ये है कि भाई लार्ज कैप का आपका यूनिवर्स 100 स्टॉक का है. तो Right. 100 में आते से ही आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर ग्रोथ और वैल्यू, कॉन्ट्रा और सिक्लिकल एंड व्हाटएवर. सो यू हैव फर्दर फ्रॉम 100 यू हैव फर्दर नैरोड इट डाउन टू maybe 40-50 or whatever it is. So Right. for managing, for consistent outperformance over Nifty 50, first thing you need a broader portfolio which takes care of all aspects or all segments of the market. तो पहली बात क्या, हम लोग स्टॉक पिकिंग बॉटम अप करते हैं, लेकिन इंडेक्स का लिहाज नहीं छोड़ते कभी कि इंडेक्स इज ग्रोथ एंड वैल्यू, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स, डिफेंसिव एंड सिक्लिकल. इंडेक्स हैज एवरीथिंग, Yeah. right? So we need to have some semblance, something. मतलब, see, to beat the index, you have to do something different from the index. ये तो obvious है. Right. Right. But आप index से कितना हटके जाएंगे? Because if you are having a significantly big departure from the index, मतलब आपने index का लिहाज छोड़ दिया है, Right. तो आपका कभी बड़ा आउट परफॉर्मेंस आएगा, उसके बाद कभी एकदम खराब Yes. आ जाएगा. But for consistency, you need a balanced portfolio construction. I think that is something which we really excel at. That is something which is unique to us. That we, in fact, if you see all the presentations of fund houses, you will find we are the only fund house which consistently has a whole segment and we perpetually speak about balanced portfolio construction. Because क्या होता है, लोगों को लगता है कि फंड मैनेजमेंट इज ओनली स्टॉक पिकिंग. स्टॉक पिकिंग अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अ पोर्टफोलियो इज नॉट जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. Yeah. इसका कितना वेटेज है, कौन सा सेक्टर है नहीं है उसमें, दैट मैटर्स अ लॉट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड द आउट परफॉर्मेंस. सो आई थिंक वेयर वी विल बी डिफरेंट will not just be that we'll have a very large research team and we have done good work on research, but also I think our portfolio construction will be significantly different. Second thing is, कई बार क्या होता है कि 80% large cap लेते हैं लोग, बाकी में बहुत रिस्क लेते हैं. Yeah. You will find that we are 80% large cap and the rest we might have mid caps, but we will not get into small caps or will not get into very aggressive things. So these are the few things which we'll do differently. Till now you can see already whatever we were managing in India as PMS, whatever our global funds we offer India funds to foreign investors, 5 साल से चल रहा है. Some of the best performing India equity fund is managed by WhiteOak. Our PMS has good track record. Recently we launched our flexi cap and mid cap, that has got to a good start.
So I think we have fair amount of confidence, कि जहाँ पे अभी market में challenges है, we will be able to differentiate significantly. Right, right. So great. So key takeaways for me was how WhiteOak AMC's large cap fund is going to be different. Is one, it's going to offer a balanced approach while configuring the fund, if I may say so. And साथ ही Yes. साथ एक बहुत important point आपने कहा that you will not be playing around a lot with the buffer that you have, the other 20%. जी. You intend to not go beyond mid caps. I feel that's very important. एक predictability, एक style में predictability बहुत जरूरी होता है, और साथ ही साथ एक true to level होना भी बहुत जरूरी होता है काफी, to a great extent. If someone's allocating to large caps, he must get the full flavor of large caps, and you know quite a lot of it gets negated if you play around a lot with the remainder 20% also. Absolutely. So to extract the full benefit, I feel that's a very important point that you made, and which makes us all the more excited for this fund. I will be looking forward to going through the portfolios, understanding and continuously tracking this fund, and also investing if it really, really looks good and promising. So all the investors out there, you can check the WhiteOak AMC Large Cap Fund. It is live on the Fisdom app. You can go through the details. It is live on the Fisdom app in the NFO section, or else you could click on any of the banners and arrive at that. So Ashish, this was about large caps in general. I feel people are having slightly different questions, but Sure. let me just pick a couple of them. Uh, Please. so one question is on the recession topic. They say that developed economies seem to be slipping into recession. Do you think India is insulated against the same? See, my suggestion or request will be not to, in a different context. When we were talking, I mentioned that while India's economy and corporate performance is doing very, very well, and we can always argue that what is the level of correlation or isolation by sector, by company, vis-a-vis the international markets. So that same logic applies here. See, the point is that never draw inferences from the stock market, Hmm. because stock market sometimes ends up being the tail which wags the dog, Hmm. but it's not meant to be that way. So for example, if you see today, our stock market seems to suggest that because our economy and corporate performance is better than the rest, means that we can defy gravity and we can just run away. That's a Right. wrong inference. Hmm. On the other hand, if globally stock markets fall and our stock market falls, on the other hand, then don't conclude that we are getting into recession. So the point I'm trying to make is that economic performance and corporate performance vis-a-vis the globe, we will have different levels of correlation and isolation. To give you Right. a proper example, during global financial crisis, US market declined because the Hmm. crisis started there. Their market declined. Our market also declined sharply. But Hmm. in 9 to 12 months, we not only bounced back, we started making new highs. You know why? Because when they had a global financial crisis and Lehman crisis and all, our Hmm. GDP growth was still 7.5%. In fact, Right. in 2009, we were supposed to have elections. So in 2008, we announced NREGS, farm loan waiver, sixth pay commission, and we were having our own sense of fiscal stimulus. Hmm. So the point is that just because they are going to have a recession doesn't mean we are going to have a recession. Right. But yes, if their market declines very sharply, if there is some big negative news, our market could also take a beating. But don't Yeah. conclude then that we are getting into a recession. Absolutely, absolutely. I feel it is very important to understand this distinction. I feel कुछ महीने पहले, even RBS governor in one of his statements, he said that while he'll have an eye out for global cues, he will follow domestic context, local context, because we are in a globalized world. There is no denying to that. But India is running its own story, right, at the same time. So it's not necessary कि जो दुनिया में हो रहा है वो इंडिया में हो, और साथ ही साथ it is not necessary कि दुनिया में अगर कुछ हुआ तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो इंडिया में महसूस नहीं होगा. So as straightforward as that, no matter how complicated it sounded when I said it, Ashish, you said it much better. So one last question I'll try to also rephrase it in Hindi. So this question is around sectors. So आशीष, आपके हिसाब से ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स के चलते, इन्फ्लेशन, वॉर, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जो भी कुछ चल रहा है, ये सबके चलते हैं, आपके हिसाब से which sectors
will be in the first order of benefiting going ahead? कौन से sectors आपको लगता है आज के तारीख में well positioned है? I think that see, so first one clarification कि हम लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया लार्ज कैप वाले सवाल के जवाब में, I already clarified that we are not a we'll have a balanced portfolio and we are not a sectoral investor. तो कुछ सेक्टर है कुछ नहीं है, ऐसा हमारा portfolio usually नहीं होता है. We'll invest across sectors. So what I'm saying does not necessarily apply to our portfolio. It will only show up as a overweight or a higher exposure, right? But I think that if you see for the next 5 to 10 years, I think that the sectors which are going to really have a good growth will be everything related to consumer discretionary consumption, basically, right? And that's what I mentioned, that when per capita income goes up from 2,500 to 6, 7, 8,000, there is proper evidence to show कि लोगों का first priority क्या होता है, to look better and to eat better and to live better. So the stage at which we are, the phase at which we are, I think next 10 years, that will be the biggest, discretionary consumption will be the biggest gainer. Just so that you can contextualize, हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल, चाइना का स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी. सो दैट इज वन थिंग टू कीप इन माइंड. उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स या सेगमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट, जैसे अगर आप देखेंगे, सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, दोस, बिकॉज कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि कैपिटल मार्केट के साथ लोगों का जुड़ना और डिजिटल के थ्रू कैपिटल मार्केट में जुड़ना, दिस इज ए सस्टेनेबल ट्रेंड. ये मुझे नहीं लगता है चेंज होगा. I don't think it will change. So I think these are two things which are top of mind, which I think will have very high growth. Other than that, of course, we'll run diversified portfolios. Absolutely. So thanks, Aashish. This brings us towards the end of this conversation. It was rather brief but really power-packed conversation, in my opinion. There's so much that I personally took away from this conversation, and I'm sure that everyone else, at least I'm hoping everyone else, was taking notes because there were some really, really beautiful insights. A quick rerun, you spoke about how should one view data, how should one view risk and returns in context of large caps, and importantly, obviously, how is WhiteOak going to distinctly manage the large cap fund, which is now going through its NFO period, which is also available on the Fisdom app. So thanks a lot, Aashish. Thank you for your time as always, and valuable insights as usual. So thanks a lot for being here and sharing your wisdom with each one of us. Thank you. It's my pleasure to speak to you and your investors. Thank you very much. Thank you, Aashish.